Hello everyone, good evening and welcome back to Aakash Byju's NEET YouTube channel. We are live once again with the series Mission MBBS and this is for 2024 aspirants. Even 2023 aspirants do definitely watch this session. We are dealing with the chapter Biomolecules, right? We are discussing these chapters extensively. बहुत detailed में हम लोग discuss कर रहे हैं and each and every minute things is what we are trying to touch upon, right? Hi Cosmos, hi Adin, Ramanuj, hey Astha, okay, you're using another account, fine. Yes, Deepan, okay, ठीक है Deepan, great. So let the students join in. We are going to talk about enzymes today and this is the second lecture on enzymes. Fine. So I hope you are, preparing yourself for your examinations. I've seen a lot of students join in the live that I did at 11 a.m. in the morning. बहुत सारे students वहाँ पे participate किए हैं. I hope you have seen the paper at least कि किस तरीके से question पूछा जाता है so that you are preparing yourself for your examination time. है ना? Great. I'll wait for a couple of more minutes so that the students can join in. Well, the Rockstar teachers are here for you with different series. I will be dealing with the zoology section along with me, your favorite Dr. Sachin Kapoor. Pankudi ma'am will be taking the botany section. Anushri ma'am for the physics and chemistry by Vivek sir. I would request you to try out our online app, the Aakash Byju's app. Try this for free for 14 days and see how personalized learning happens. It's very different. Yes, Cosmos, you need my blessings. Absolutely. My best wishes. Okay. I think I've always been wishing for all good luck for you. I've always asked, that everything what is good comes to you. एंड सर जिस दिन मैं ज़्यादा टेक्स्ट कर लूँ जैसे आज मॉर्निंग से तो टेक्स्ट डिलीट होने लगते हैं. अच्छा ऐसा है क्या? ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि इफ़ यू टेक्स्ट अ बिट मोर देन दैट हैपन्स बट अच्छा यू आर टेलिंग आपके अकाउंट से टेक्स्ट डिलीट हो रहा है. ओके दैट्स समथिंग न्यू. आई विल टेल माई टेक्निकल टीम टू चेक इट बट इफ इट्स समथिंग विच इज़ अ फीचर ऑफ यूट्यूब देन अनफॉर्चुनेटली वी कैन हेल्प. नो प्रॉब्लम. आपको तो तरीका आता ही है. आप यू हैव मेड अ न्यू अकाउंट एंड यू आर हियर. इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन व्हाट्स रिक्वायर्ड. यस, subscribe the section, subscribe the channel, like this session and share it. Do keep commenting all your questions and we, the Aakash Byju's team, is definitely going to get back to you. So the students are joining in slowly and steadily. I'll start with the concept of enzymes. Let the students join slowly. Share it. सबसे share करो. Astha, Sunil, Jyoti, good evening. Sunil, good evening. Share it with your friends, with your family. Ask everyone to join. See how the teachers at Aakash Byju's are dedicated just to teach you and take you to reach the peak. Fine. Chalo, enzymes. A very important topic that we all have. Yes, you have shared. Perfect, Koshi. This topic of enzymes is absolutely important. One of my favorite topics. And let's start with a quick recall. Enzymes के बारे में हमने पढ़ा है. सबस्ट्रेट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनता है. यहाँ पे एंजाइम्स का काम क्या है? कैन यू टेल मी ऑन द चैट्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? सबस्ट्रेट से तो प्रोडक्ट बनेगा बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम ओवर हियर? हाउ आर एंजाइम्स प्लेइंग अ रोल ओवर हियर? टेल मी, हाउ आर एंजाइम्स प्लेइंग अ मेजर रोल ओवर हियर? Lakshmi, good evening. Jyoti, good evening. Yes. Enzymes help in bringing down the activation energy for this reaction. See, enzymes, enzyme substrate complex. Enzyme will be released as it was and product will be formed. So enzymes are those catalysts that help in bringing down the activation energy that increases the rate of the reaction. But during the course of this reaction, they are not utilized. They don't get used. Fine? Yes. Awake. Yes, no problem. See the session later. I would request you to focus on 17th.
17th के पेपर के लिए फोकस करो. Yes, Jyoti, correct. Fine. चलो, I'll show you a quick graph. See, कैसे energy. Okay, I'm talking about energy. एक peak पे आया. This is the activation energy where the bonds are broken. I'm talking about this type of reaction. And see here, this is the delta H. This is the difference of the energy. With the enzyme, the activation energy comes down. Do you see? The activation energy has come down. That is the function of the enzymes. This way, it increases the rate of the reaction. Now, what we are going to yes, Avik, bye-bye, no problem. With this, we need to study about the factors that affect the enzyme activity. We have been studying about enzyme activity. There are many factors which affect the enzyme activity. Kal mock wala. Yes. We had a mock yesterday, and today we had discussed the session. Okay. Well, let's see. Temperature, pH, substrate concentration, enzyme concentration, and inhibitors. Absolutely important. All of these factors actually determine the enzyme activity. We'll start with our discussion with enzymes. Sorry, the temperature. So temperature is the first topic of our discussion, the first factor. Temperature, narrow range of temperature at which enzymes are active. Look, all enzymes cannot work under all temperature conditions. There's a narrow range of temperature condition where they remain active. Active form में तभी रहेंगे and then only they can undergo the required reaction, or they can help the bringing down of activation energy for a particular reaction. है ना? Okay. This is called the optimum temperature. Optimum temperature क्या है? Very important word. Temperature at which the activity is maximum. Keyword. This is the keyword. The temperature at which the activity of the enzyme is maximum. देखो. Why are these important? If you give high temperature to the enzymes, what will happen? There's a lot of energy. High temperature means nothing but a lot of energy. A lot of energy can cause bond breaking. This will cause denaturation. Why? Because it will break down the bonds. It will change the conformation, the active conformation of the enzyme. The three-dimensional structure of the enzyme will be ruptured, so they cannot keep themselves active. This is denaturation. Now again, on the other hand, very low temperature, it makes it temporarily inactive. See the word, focus. Temporary inactive. That means for a certain period of time, till the point the temperature is very low, it remains inactive. That's the principle used in refrigeration. Okay. Good evening, Rushikesh. Yes. So that is the principle used in refrigeration, right? We keep it fresh, the fruits, the vegetables fresh under low temperature. So it remains inactive. So once you bring back to the normal temperature, it becomes active and undergo the reaction. See here, temperature. क्या दिख रहा है? Molecules have very little kinetic energy. Initially, धीरे धीरे बढ़ रहा है, kinetic energy बढ़ते जा रहा है. See what's happening. Now, what will happen? The optimum temperature for the enzymes is reaching. So they are catalyzing the reaction. But again, जितना temperature बढ़ता जाएगा, it's not that the catalytic activity will increase. Why? Because this point, the peak, this is the range of optimum level. This is the best possible temperature for the best possible activity. So that's the optimum temperature for a particular enzyme. Different enzymes have different optimum temperature for their activity. Got it? Activity is max. Yes, we'll talk about Michaelis equation. Not the equation, but yes, Michaelis Menten constant. We'll talk about it. ठीक है. चलो, got this point? Temperature, you got it? So basically, to summarize, कम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, then the enzyme activity starts increasing. धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, it's increasing till the point, it will increase till the point it has reached its maximum level. ये लेवल पहुंच गया, right? After that फिर से इंक्रीज करो, क्या और बढ़ेगा? ना, it will not increase further because that's the optimum temperature. इसके बाद और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे उनके bonds breaking होते हैं. That's the reason they become inactive, denatured rather. Got it? Perfect. Now, so temperature done. Now let's talk about
B, which is pH. Can pH determine the activity of the enzyme? Yes, definitely. Why not? Let's see. Enzymes are sensitive to pH. Different enzymes are active at different pH level. ठीक है, जैसे salivary amylase जो pH हमारे माउथ में उसके बेसिस पे होगा. जैसे enzymes which are there in the stomach, they remain active even in very low pH, which is like the HCl. The presence of HCl also do not denature these enzymes. Fine. Narrow range of pH at which enzymes are active. Again, optimum temperature जैसे optimum pH भी होता है where the activity is maximum. See the graph here. देखो पेप्सिन का low pH में काम करते हैं. You know, around 6 is the salivary amylase के pH. Alkaline phosphatase थोड़ा सा ज़्यादा है, like 8 around. देखो, ठीक, around in fact 9. It's the optimum pH. So different enzymes have different pH. इसका मतलब क्या हो रहा है? That salivary amylase, इसका जो 3-dimensional conformation, it is in the best possible state or best possible active conformation in around a neutral pH, around a neutral pH. ठीक है? If I talk about pepsin, stomach में है, it remains active at a low pH, acidic condition में. On the other hand, if you talk about the third enzyme, which was, what did I show? Alkaline phosphatase. Yes, alkaline phosphatase, this remains active under alkaline conditions, high pH. ठीक है? So, now beyond this range, what will happen? High pH में denaturation हो सकता है, low pH में inactive state. Again, it can cause denaturation. Look, acidic and basic. Being acidic and basic is, again, it's a matter of charge. If the charge changes, the conformation will definitely change. It can result into inactivation. Got it? So pH is done. Fine. Substrate concentration. C. Socho. If I talk about the enzyme activity based on the substrate concentration, what is going to happen? If you increase the substrate, tell me on the chats, will the enzyme activity increase or not? On the chats, let me see. Chat पे बताओ, the enzyme activity will increase or not? What I'm telling, if I increase the substrate concentration, will the enzyme activity increase or it will decrease? बताओ, let's see, let me see if you're understanding it correct. Increase up to a certain limit. Yes, increase up to a certain limit, beta. उसके बाद decrease. Astha has given the answer. ठीक है ज्योति, समझ में आया? सिर्फ increase नहीं बेटा, थोड़ा descriptive लिखो. Increase and then it will generally go into a saturated level. Let's see. Substrate concentration. See here, I'm showing it with respect to a graph. This is on the x-axis substrate concentration, on the y-axis reaction rate. At a low substrate concentration, I am representing like this, S. Substrate concentration, है ना? सर इंटेंसिव में 500 प्लस नहीं आ रहा है क्या मेरा हो पाएगा? क्या पूछ रहे हो नावेद खान? थोड़ा सा डिटेल बताओ ना. यस, सैचुरेशन लेवल. आस्था करेक्ट. देखो, लो concentration of substrate, इसका मतलब क्या है? There is not enough substrate for the enzymes to go to its maximum activity level. So, reaction rate कम ही है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है. As and when you are increasing, it's increasing. The reaction rate is also increasing. But ये increase होते होते एक लेवल पे पहुंच जाता है. This point, it's the maximum state, at the maximum level. एक पॉइंट के बाद, even if you increase the the substrate concentration, the enzyme activity does not increase. Why? Can you tell me? This is because the concentration of the enzyme is fixed. You are increasing the substrate, so all the active sites are occupied at this state. Now सवाल ये है कि occupied है, ये तो dip होना चाहिए. Stable क्यों बता रहे हो आप सर? Correct? Yes. मैंने क्या बोला था? Enzymes undergo the reaction, then release, then they are free to undergo again another new set of reaction.
तो मैक्सिमम लेवल पे दे विल कीप कन्वर्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट एंड यू आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, डजंट मैटर, सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी है, सो इट विल कीप ऑन conversion or making the product substrate into product, but number of enzymes, the amount of enzyme there is fixed, right? So after a certain level it attains saturation. Got it? Fine. आयुष बस देख के 2-3 बार ड्रॉ कर लो, फिर एक बार बिना देख के करो, then you will be able to do it. Now ये हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्व, ठीक है? माइकलिस मेंटन इक्वेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पर वहां से ये कर्व डिराइव किया जा सकता है ना? अच्छे से देखो, इधर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड द एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे व्हाट वी हैव शोन इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. गॉट इट? वी मैक्स वेलोसिटी, इसका आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स, द रिएक्शन रेट यू कैन से, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में यू कैन से द रिएक्शन रेट. गॉट इट? जो मैं देख रहा हूं एट ए रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, व्हाट इज हैपनिंग, द इनिशियल स्पीड ऑफ द रिएक्शन, द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है ना? ये लीनियरली इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आल्सो. कैन आई सी दैट? यस, डेफिनेटली. यहां पे ये इंक्रीज हो रहा है. आई विल चेंज द कलर. यहां पे ब्लू, यहां पे ये इंक्रीज हो रहा है. करेक्ट? कुड यू सी इट? परफेक्ट. ओके. नाउ अगर गौर से और देखिए इस ग्राफ को, मैं देख रहा हूं इंक्रीज होते होते एक डिप आ रहा है. इट्स लाइक इट्स गोइंग टुवर्ड्स सैचुरेशन, इट्स नॉट इंक्रीजिंग लीनियरली नाउ. ठीक, इस पॉइंट पे देखो, इज इट इंक्रीजिंग लीनियरली? नो, अब इंक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट ये कर्व टिल्ट होते जा रहा है. करेक्ट? नाउ जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, molecules are fewer than the substrate molecules and the saturation of these molecules will be happening. Then no free enzymes are there to undergo more reaction process. धीरे धीरे additional substrate, even if you are increasing it, doesn't matter, it will reach the maximum velocity point, and after that it's a saturation level. Enzyme kinetics, yes, Dujay. ठीक, got it? Got the point? Now यहाँ पे देख रहा है. So what I understand कि ये जो V max है, this is the point, इसके beyond और नहीं बढ़ सकता एंजाइम एक्टिविटी, रेट ऑफ द रिएक्शन और नहीं बढ़ेगा क्योंकि सैचुरेशन हो गया है. Got it? This is called V max. Got it? Now, do you see Km? What is Km? This is called Michaelis constant. What is this? This is nothing but the substrate concentration at which the reaction rate is half the maximum. और एक बार, once more, Km, the Michaelis constant, is basically the substrate concentration at which the enzyme activity is half of its maximum. देखो ये half है, तो मेरा substrate concentration क्या है? ये. Fine, that is Km. Got it? ये बहुत important है because when we are talking about inhibition, enzyme kinetics in terms of inhibition, then this is going to be very important for you. ठीक है? तो सोचो अगर हाई Km है और एक एंजाइम, one enzyme A which has high Km value, enzyme B has low Km value. ठीक? Let's imagine ये चलो 6 units, this is 8 units. Sorry, उल्टा, this is low मतलब this is 6 units, this is 8 units. Normal, random number. अब इससे क्या infer कर सकते हैं हम? What can we conclude? Let's try to analyze. मतलब this enzyme A is reaching half of its maximum value, maximum Km, the maximum velocity at a lower substrate concentration. तो बाइंडिंग एफिशिएंट है. एंजाइम ए इसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है टू रीच द हाफ द मैक्सिमम वैल्यू. सो एंजाइम बाइंडिंग कंपेयर टू दिस इज लेस एफिशिएंट. गॉट इट? दोस्तों क्लासेस तो हो रहा है बेटा, क्लासेस तो हो रहा है
है ना? You got it? So higher Km means the substrate has lower affinity for the enzyme. ठीक? And more concentration of the substrate is needed to attain the maximum velocity. Clear all of you? Very important point. चलो आगे बढ़ते हैं. Low substrate concentration, low enzyme activity. Optimum substrate concentration, maximum enzyme activity. High substrate concentration, no change in maximum activity. Got the points? Got the parameters? This is the saturation point. इसके बाद कितना भी आप increase कर दो substrate concentration, it is not going to increase the enzyme activity. Fine? So got the relationship of enzyme activity with respect to substrate concentration? Clear? हाँ, correct. Asta, very good. Next, let's move on. Now we are going to talk about enzyme concentration. चलो, substrate तो बढ़ा दिया, फिर देख लिए कि एक linear increase के बाद then saturation point आ गया. But let's imagine I'm increasing the enzyme concentration. तो फिर क्या होगा? When the concentration of the enzyme increases, the rate of the reaction increases. Definitely substrate है, enzymes आप बढ़ाते जा रहे हो, तो reaction rate तो increase होगा. When there are more enzyme molecules, more of the substrate can bind to form the product. Yes, more product banega. But once all the enzyme molecules are saturated with the substrate, an increase in concentration of either one will not alter the reaction rate. जब सारे एंजाइम सैचुरेट हो गए, भले ही आप एंजाइम बढ़ाओ या तो सबस्ट्रेट बढ़ाओ, रिएक्शन रेट का कोई चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सैचुरेशन आ गए ना. There is no more enzymes to bind substrate, or there is not enough enzymes to bind the substrates. Got it? So this is about the enzyme concentration and its relation with the enzyme activity. Okay, Jyoti, no problem, just watch it later. Let's go to the next point. We have talked about temperature, talked about pH, we have discussed about substrate concentration, we have discussed about enzyme concentration, and we are now going to talk about inhibitors. Very, very important. Inhibitors क्या है? What are inhibitors? नाम से समझ में आ रहा है, inhibit करना. These are the chemicals that shut off the enzyme activity. Enzyme activity को कम या बंद करने के लिए जो molecules है, those are the inhibitors. In other words, what you can say, inhibitors inhibit the enzyme activity. देख लो, enzyme activity inhibit कर रहा है in this animation. You can see this animation. If they are binding, the enzyme is not able to bind to the substrate. If the enzyme is not able to bind to the substrate, then the product is not going to be formed. आसान है? चलो पढ़ते हैं. एंजाइम इनहिबिशन की कोई टाइप्स है? डेफिनेटली है. Types of enzyme inhibition. So first type we are going to discuss is competitive. What we are going to talk about in today's session are competitive inhibition, non-competitive inhibition and uncompetitive inhibition. देखो ये दोनों में confusion होती है, so please pay attention. First, let's start with competitive inhibition. Competitive, नाम से समझ में आ रहा है, compete करना. So यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव साइट पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे द सबस्ट्रेट इज बाइंडिंग, और एक कुछ मॉलिक्यूल है जो कि सबस्ट्रेट जैसा ही है, जो वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे ही बाइंड कर सकता है. दैट मींस देयर इज अनदर मॉलिक्यूल व्हिच इज quite equivalent to the substrate which can come and bind to the enzyme active site. So competitive inhibitor resembles the substrate, it competes with the substrate for active site. मतलब जो desired product है वो नहीं बनेगा, because see here the competitive inhibitor is binding to the active site, so the actual substrate will not be able to bind to the active site, hence the desired product will not be formed. Got it? So enzyme inhibitor complex बन जा रहा है, EI complex other than ES complex is not forming. Enzyme substrate नहीं, enzyme inhibitor complex बन रहा है. ठीक? Now I'm going to show you graphically uncompetitive. मैं बताऊंगा. आस्था will talk about uncompetitive and non-competitive. Graphically इसको represent करें तो कैसे होता है, बहुत important है. First ध्यान से सुनना है आपको. First see, this is again x-axis में substrate concentration, y-axis में rate of reaction. अब देखो green में जो दिख रहा है that is the reaction
कर्व विदाउट द इनहिबिटर। अगर इनहिबिटर डाल रहे हैं, अब देख रहे हो कि वी मैक्स कुछ चेंज नहीं हुआ है, वी मैक्स सेम है, सेम जगह पे वी मैक्स है। क्यों? क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी तो चेंज नहीं हुआ है, एंजाइम तो बाइंड तो कर ही पा रहा है ना। बट व्हाट यू सी दैट यहां पे दिस कर्व इज स्लाइटली इट हैज मूव टुवर्ड्स द राइट। दैट मीन्स जो भी करना है इस एंजाइम से थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट चाहिए। क्यों? बिकॉज और एक मॉलिक्यूल है विच इज इनहिबिटर which is competing with the substrates to bind to the enzyme. So ज्यादा substrate concentration बढ़ा दोगे तो फिर वो enzyme से जाके efficiently bind कर सकता है. So availability of the substrate molecule, if it increases, it will require more of substrate molecules to achieve that same maximum velocity of that enzyme activity. Got it? ठीक है, एक example देखो. एंजाइम सक्सिनेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सक्सिनेट कॉम्प्लेक्स देगा क्या? फ्यूमेरेट प्लस एंजाइम, एंजाइम प्लस मैलोनेट, मैलोनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड नो प्रोडक्ट इज फॉर्म. सो मैलोनेट एक्ट एज द इनहिबिटर फॉर सक्सिनेट एंजाइम. ठीक है, गॉट इट. सो फ्यूमेरेट नहीं बनेगा यहां पे. सो द एंजाइम नेम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस. Succinate dehydrogenase is the enzyme. ठीक. So malonate becomes the inhibitor here, which closely resembles with what? Succinate. ठीक. चलो. You know, such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens. ये competitive inhibition कर सकते हैं. हे जहान, हाँ पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे. ज्योति वेट, कमिंग टू दिस पॉइंट. नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव समझ में आया. नॉन कॉम्पिटिटिव इजी है, मतलब कॉम्पिटिटिव में एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा था, नॉन कॉम्पिटिटिव में एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड होता है. लेट्स सी. बाइंड्स टू द साइट व्हिच इज अदर देन द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता है, बट अदर देन द एक्टिव साइट. सी रेड वाला कहां बाइंड कर रहा है? एक्टिव साइट पे ना, कहीं और बाइंड कर रहे हैं. पर ये एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट पे ना बाइंड करके कहीं और बाइंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो जा रहा है, structure change हो रहा है, three dimensional conformation is getting changed. So what will happen? The substrate will not be able to bind to the enzyme. That is again a type of inhibition, but non-competitive. Compete नहीं कर रहा है, अलग जगह पे जाके bind कर रहा है. Why non-competitive? Because it's not competing for the same active site as which is going to be used by the substrate. Changes the shape of the active site such that the substrate is not able to bind. Can bind to the free enzyme or the enzyme substrate complex. Free enzyme पे भी bind कर सकते हैं, enzyme substrate complex में भी bind कर सकते हैं. अब तीनों को मिला के ग्राफ देखते हैं. नॉर्मल एंजाइम, ये देखो Vmax यहाँ पे. ठीक, लेट्स सी. नॉर्मल एंजाइम के लिए इफ आई सी द Km इज अराउंड हियर हाफ. ये हो गया मेरा Km. Michaelis constant. This is the substrate concentration where half the maximum velocity is reached. अगर competitive inhibitor दिया है, what we had seen कि ग्राफ थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो रहा है. Vmax सेम है, बट Km चेंज हो गया है. देखो Km कहाँ है? ये अब Km यहां है. This is Km for competitive. I am writing just comp. Got it? This is for 1, that is without any inhibitor. Km shift हो गया. हमने क्या पढ़ा था कि ज्यादा सबस्ट्रेट अगर लगेगा मतलब एफिनिटी कम करवा दे रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से, है ना. सो सी, इट्स प्रूव्ड बाय द ग्राफ. अब नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव में इट इज नॉट कॉम्पिटिंग फॉर द बाइंडिंग ऑफ द एक्टिव साइट, बट कहीं और बाइंड कर रहा है. सो यहां पे Km सेम रहता है. ठीक है, Km सेम रहता है, बट व्हाट हैपेंस, देखो Km इज अराउंड हियर, क्योंकि ये इसका बन गया मैक्स, ये Vmax बन गया, और हाफ इज अराउंड दिस. सो Km सेम हो गया मेरा 3 के लिए. Km सेम है, हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करने के लिए अराउंड सेम सबस्ट्रेट चाहिए, बट मैक्सिमम वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग.
है ना? क्यों? क्योंकि एंजाइम अब बाइंड नहीं कर पा रहा है विथ द मॉलिक्यूल्स, इसका शेप ही चेंज हो जा रहा है। ठीक, Jahan, thank you so much that you know, this is very important for NEET. Yes, yes, it is important. Jahan, thank you that you are watching these sessions diligently every time. Very good. Example देखो, heavy metal poisoning, active site changed. Why? Because non-competitive inhibition हो रहा है. Heavy metal, they can come and bind to the essential enzymes and it can change its active site conformation so that the substrate is not able to bind anymore. Example is the mercury poisoning. Now let me explain you uncompetitive. यहाँ पे तो फिर क्या हुआ? यहाँ पे active site bind, यहाँ पे other than active site, ठीक है? Uncompetitive में क्या हो रहा है देखो? Binds to the enzyme at the sites other than the active site but cannot bind to free enzyme. Free enzyme में नहीं bind कर पाएगा, तो ES complex जहां पे है वहां पे ही bind करेगा, तो that is uncompetitive inhibition कहते हैं इसको. ठीक है? नमस्ते श्रीशा, राइट? नमस्ते जी. नाउ अब पढ़ते एंजाइम्स के नाम. डिहाइड्रोजिनेज, कैटलेज, आइसोमरेज, काइनेज, कैसे आ रही है? व्हाट डज दिस सिग्निफाई? आप हमेशा पूछते हो सर ऐसे नेम से कैसे समझ में आए कि रिएक्शन क्या होगा? इनफैक्ट रिएक्शन देखे एंजाइम क्या होगा ऐसे कैसे समझ में आएगा? यस, दिस इज हाउ इट विल हेल्प यू. नेमिंग ऑफ द एंजाइम्स. नेम ऑफ एन एंजाइम इंक्लूड्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन कैटलाइज्ड, क्या रिएक्शन हो रहा है, नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, इससे डिड्यूस किया जाता है, एंड सफिक्स इज जनरली एज. जैसे एटीपीएज, एंजाइम ब्रेकिंग डाउन एटीपी, देखो सबस्ट्रेट से आ गया एटीपीएज, एंजाइम एज. ठीक है? नाउ एटीपी सिंथेज, एंजाइम दैट सिंथेसाइज एटीपी. सिंथेज फंक्शन बता रहे. ठीक? International Commission on Enzyme, they laid down the rules in 1961 for naming of enzyme. So they decide the enzyme nomenclature. Great. चलो देखते हैं different enzyme names. हाँ हाँ शायद कोई भी दिक्कत नहीं, अभी पढ़ा रहा हूं मैं, देखो आसान हो जाएगा. ठीक है? लेट्स सी. श्रेषा, लेट्स सी. ऑक्सीडोरिडक्टेस कितने? एक. ट्रांसफेरेंस 2. 3 हाइड्रोलेज, 4 लाइज, 5 आइसोमरेज, 6 लाइगेज. ऑक्सीडोरिडक्टेस समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ट्रांसफरेज, ट्रांसफर. हाइड्रोलेज, वाटर रिलेटेड कुछ. लाइएज, विल सी, बॉन्डिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग देखेंगे. आइसोमरेज एंड लाइगेज. लाइगेज तो पढ़ा है कहां? We will be studying during the replication process, molecular basis of inheritance. ठीक है? चलो एक एक करके पढ़ते. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडोरिडक्टेस और डिहाइड्रोजिनेस. देखो अदिन, यस, A प्लस बी, A रिड्यूस एंड बी ऑक्सीडेस लिखा हुआ है. कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. ठीक है? एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, ऑक्सीजिनेजेस, peroxidases, these are all oxidoreductase enzymes. ठीक है? और डिहाइड्रोजिनेसेस बेसिकली. फाइन. सो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस करेंगे. हेलो टेक्नोलॉजी गेमर, ओके. पूनम, गुड इवनिंग. नाउ ट्रांसफरेज, ये तो इजी था. ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ट्रांसफरेज नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स. देखो ए बी प्लस सी, यहां पे ए प्लस बी सी, ये ज्वाइन हो गया. जैसे ट्रांस कार्बोक्सिलेज, ट्रांस अमाइनेज, काइनेज. काइनेज क्या करेगा? फॉस्फेट, फॉस्फोरस ग्रुप ऐड करेंगे. फॉस्फोराइलेज. फाइन. सो दे कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स. कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोलेज नाम से समझ में आ रहा है. वाटर, कैटलाइज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बाय यूजिंग वाटर. वाटर ऐड कर दोगे तो ए बी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ए एच के साथ
बाइंड कर रहा है एंड BOH, सो हाइड्रोलेजेस, राइट, गॉट इट। जैसे फॉस्फोडाइस्टरेज इज अ हाइड्रोलेज एंजाइम, पेप्टिडाइजेस हाइड्रोलेज एंजाइम, फॉस्फोराइलेशन, ओके, ठीक। सो दीज आर हाइड्रोलेजेस। नाउ लाइएज, यहां पे देखो क्या हो रहा है, A डबल बॉन्ड B, HX, AX बन गया एंड BH, सो दे कैटलाइज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विदाउट यूजिंग वाटर। यहां पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है पर वाटर यूज नहीं करते। द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर बॉन्ड्स, ओके, राइट, इट ब्रेक्स द बॉन्ड अदर देन द यूज ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यूज नहीं करते पर ब्रेक कर सकते बॉन्ड, सो दीज आर द लाइज। नेक्स्ट आइसोमरेज, राइट, आइसोमरेज AB, ये BA, क्या हुआ इधर, कुछ नहीं, आइसोमराइजेशन कैटलाइजेस a switch between isomers, simple switch, right, isomerase, epimerases, these are the isomerase enzymes, mutases, cis trans isomerase हम पढ़ेंगे, right, when we talk about conversion of glucose to pyruvate, glycolysis पढ़ेंगे, ऐसे है ना, बहुत सारे isomerases है। ligase, ligase is A plus B plus ATP, एनर्जी यूज हो रहा है, AB ज्वाइन करवा रहा है प्लस ADP, क्यों, एक फॉस्फेट ब्रेकिंग पे जो एनर्जी रिलीज हुआ इससे ये ज्वाइन हो गया, गॉट इट। सो कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, फाइन, गॉट इट, वेल। सो एंजाइम्स का इतना ही, आई विल क्विकली समराइज व्हाट एवर वी हैव स्टडीड टुडे, जल्दी से देख लो। We have talked about the factors affecting enzyme activity. टेम्परेचर, इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हर एंजाइम का। पीएच के लिए भी ऑप्टिमम पीएच हो सकता है, बट पीएच जो ऑप्टिमम रेंज है वो डिफरेंट है, ठीक। सेम गोज फॉर टेम्परेचर ऑल्सो, जैसे कुछ एंजाइम्स टैक डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक, लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं वो। पीएच के लिए भी सेम। Substrate concentration, increase in substrate concentration will increase the enzyme activity, but up to a certain level. After that, it won't, because saturation हो रहा है. Same goes for enzyme concentration. If you increase the enzyme concentration, enzyme activity increases, but up to a certain level. Inhibitors we have studied, right? Yes, question में बात कर रहा हूँ, question के बारे में बात करूँगा. Inhibitors, right? कैसे? Competitive inhibition हो सकता है, non-competitive inhibition and uncompetitive inhibition. कॉम्पिटिटिव मतलब एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब अदर देन द एक्टिव साइट बाइंड कर सकता है, अनकॉम्पिटिटिव मतलब इट कैन ओनली बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, गॉट इट, स्टडी दिस नाउ। फंक्शंस, डिफरेंट एंजाइम्स, ऑक्सीडोरेडक्टेज कैटलाइजेस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ट्रांसफरेज कैटलाइजेस ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, हाइड्रोलेजेस बॉन्ड ब्रेकिंग विद द यूज ऑफ वाटर, लाइएज बॉन्ड ब्रेकिंग विदाउट यूजिंग वाटर, isomerase catalyze switch between isomers, ligase joining of molecules by formation of bond. एक past year का सवाल कर लेते हैं, देखो, see here, which of the following statements are incorrect? What I need is incorrect, and this is the question which was asked in 2015 NEET examination. Why don't you take regular classes? Jahan beta, I'm coming almost regular, trying to cater to different groups of students. Some are targeting 2024, some are targeting 2023, some were targeting 2022 because their exams are near, right? And also देखो, अगर मैं खुद रोज आ जाऊं, then what will happen, you will study one particular subject a lot, but what is required for you to crack NEET examination is equal distribution, equal weightage to all the 4 subjects, botany, zoology, chemistry and physics, ठीक है, but no problem, जितना भी टाइम मिल रहा है, जितना भी हो सकता है, आई ट्राई टू कम लाइव एंड डिस्कस विद यू, ठीक है। ऑक्सीडोरेडक्टेज बेटा, वो कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेंगे, राइट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते कुछ एंजाइम से, ठीक है, राइट, चलो। Which of the following statements are incorrect? The presence of competitive inhibitor decreases KM of the enzyme for the substrate. पता लग गया आपको आंसर। A competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex. In competitive inhibition, the inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme,
And the competitive inhibitor does not affect the rate of the breakdown of enzyme substrate complex. What is the correct answer? Yes. Very good. This is the correct answer because it's the incorrect statement. The presence of competitive inhibitor decreases, nahi, increases. Fine. Got it? A competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form enzyme inhibitor complex. You know this? Yes, that is true. Got it? The competitive inhibitor does not affect the rate of breakdown of the enzyme substrate complex. Yes, true. In competitive inhibition, the inhibitor molecule is not chemically changed by the enzyme. ठीक? But ये गलत है. The presence of competitive inhibitor decreases, नहीं, increases the Km. So, see, graphically I have represented it. That is the correct answer for your question. And today, we completed our session, short and crisp, but a very important topic. What I would request you today is to go and revise this section because enzymes बहुत important है दो वजह से. एक तो एंजाइम से सवाल आ जाता है. सेकंड, एंजाइम समझोगे तो आगे जाके बॉटनी के काफी सेक्शंस आपको समझ में आएगा, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, राइट. सो ये सब जब आप पढ़ोगे उसके लिए एंजाइम्स के फंक्शन, एंजाइम्स क्या है, कैसे काम करता है, ये आपको आना चाहिए. एंड इफ यू डू फर्दर स्टडीज, एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकेमिस्ट्री, राइट. सो all the best. Thank you for joining the session. People who could not join because of other priorities, please rewatch this session, share this session with all your friends. Till then, I'll say a goodbye. I'll see you in the next class. Bye bye. Take care.